ओके देखो उडे नया चैप्टर स्टार्ट करिया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक ऑफ द अरिथमेटिक मु कहि दिले वी हैव डिवाइडेड इन दिस थ्री पार्ट्स चारि भाग भी हमें कहि परिबा यू कैन से आल्सो दैट फोर पार्ट्स इन द थर्ड पार्ट ओनली वर्क टाइम एंड वेजेस वन इज द पेमेंट सिस्टम एंड both the chapters are of the similar type देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस संग हम एक्चुअली बहुत भल से एक्चुअली अकाउंटेड हे कि अछि बट सबुट इंपोर्टेंस वाला पिला एक्चुअली एग्जाम रो क्वेश्चन एक्चुअली बुझी पारंतनी जोटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा छोट छोट क्वेश्चन पढे एक्चुअली सॉल्व करियाडा इजी है बाकी क्वेश्चन कले बे एक्चुअली इक्वेशन फॉर्म करिया को पड़े ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करिया को पड़े सो इट टेक्स एक्चुअली लॉट टाइम and तार गोटे पार्ट एक्चुअली जोटा बोटन स्ट्रीम अगेन इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट मान को भीतर बोटन स्ट्रीम डाली आउरी कंफ्यूजन क्रिएट करे एमती तो किछन पिला अछन ट्रेन आ बोट स्ट्रीम गोटे ताने फोबिया हे रहि जाई पिला को भीतर यदि क्वेश्चन यदि से भीतर आसिला ताले क्वेश्चन पल्ला गोटे चक्कर एक्चुअली दिमाग गोटे खराब तो एमती किछि भी एक्चुअली नाही ए चैप्टर जोटा कि हम ऑलरेडी आज एक्चुअली पढिनी आमे सब जाको कांसेप्ट ऑलरेडी कवर करी सारी जे पार्ट ऑफ दैट इन द परसेंटेज एंड द अदर पार्ट इन द रेशियो देयर इज नथिंग मोर इज देयर एंड जस्ट हमको ले गोटे इनसो माइंड रखिया को पड़िबो जे जो इनवर्स रिलेशनशिप हम जो करूथिले परसेंटेज रे एक्सपेंडिचर प्राइस आ जोटा क्वांटिटी से रिलेशन दा हमें ठीकली बाहर एक्चुअली करी हम बुझी जवा रहछि सो बिफोर दैट छुटिया जिंस केतरा हम हेलिटली क्लियर हो जवा कोन देखो समस्त जानी जो फार्मूला स्पीड रो फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तमे जदी 10 किलोमीटर पर आवर गाड़ी रो स्पीड जदी सीधा 40 किलोमीटर पर आवर करी जाओ 3 घंटा जदी ट्रैवल जदी करो ताले 40 into 3 इक्वल टू 120 60 स्पीड जदी नॉन स्टॉप जदी 2 घंटा गलो देन यू विल कवर 60 into 2 इक्वल टू 120 प्रवीण अच्छा प्रवीण ओके तो एबे देखो क्वेश्चन हमें एटा कोन उठे ओके देखो general formula that every person use and will also use when it will be required the distance equal to सब भंजा बदिया कर जंदे गले पिला मान को ग्रेड देखो distance equal to speed into time बाकी दीटा फार्मूला भी एथरे भी बाहरी जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड गोटे यूनिट बाकी हमको मेंटेन कर रखिया को पड़ियो दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट हियर गोटे यूनिट हमें मेंटेन करके रखिबा the general unit that are used in the questions most of the time actually data unit actually use हुए I'm changing this formula into speed equal to distance by time data unit generally use हुए समझते जानी चाहिए हमें 1 is kilometer per hour another one is meter per second it is also written as kmph these are the general units एमती नो कि क्वेश्चन रेजिल अलगा यूनिट एक्चुअली आसीबन बाकी ए यूनिट को हम बहुत से बुझी गेले बाकी यूनिट हम कहले डिफिकल्ट एक्चुअली हवन किलोमीटर पर आवर समटाइम्स द क्वेश्चन में गिव किलोमीटर पर मिनिट किलोमीटर पर सेकंड भी दे पारिबो ट्रेन केस रे एमती किछि भी नो एक्चुअली एंड हमको खाली गोटे खाली बुझीबार अछि जे स्पीड ता जे तो डिस्टेंस बाय टाइम जे तो हो जे then the unit of speed also completely depends on the unit of the distance and unit of the time तो जेते बेले डिस्टेंस रो यूनिट करा ता माने किलोमीटर रे थिबो एंड टाइम रो यूनिट ता माने आवर रे थिबो डिस्टेंस रो यूनिट बहुत रे पॉसिबल किलोमीटर हला मीटर हला सेंटीमीटर हला माइल हला
टाइम सेमती आवर हे पारे मिनिट हे पारे सेकंड हे पारे बहुत एमती यूनिट पॉसिबल जेमती हमें कॉम्बिनेशन बने बने जीवा स्पीड यूनिट सेमती चेंज हेइचली जीवो माने जदी किलोमीटर तळे कि मिनिट दे देला ताले किलोमीटर पर मिनिट हेबो ऊपर मीटर दे कि तळे जे आवर दे देला ताले मीटर पर आवर हेइबो एमती किछि ताने फिक्स नाही हमें ता माने मैक्सिमम के जनरल केस जोटे क्वेश्चन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आसु जे हमें ताकू ने कि फोकस करू जे one is kilometer per hour another one is meter per second देखो जेते बेले किलोमीटर पर आवर अछि then you must confirm distance will be in the kilometer time will be in the hour जेते बेले मीटर पर सेकंड अछि will be confirm distance will be in the meter and time will be in the second एमदी किछिटा क्वेश्चन अछि and in train the 99% question जो जगह रे कि they are interlinked both the unit kilometer per hour and the meter per seconds are interlinked माने कोन हमको बेले बेले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिया को पड़िबो बेले बेले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर रे कामे दाले जि तार केमदी कन्वर्शन हो जे एंड व्हाट द इंपोर्टेंट फैक्टर that should be multiplied for this conversion will derive now and it will remember further एटो आकु ताम नाम होइले मने रखि हमको सॉल्व करिया को पड़िबो जदी गुटे स्पीड टे x kilometer per hour अछि that means I can say this is x kilometer distance is covered in 1 hour x kilometer distance जदी 1 घंटा रे कवर होची now I can say that x into 1000 meter is covered in 3600 second now I can say that this 000 is cancelled 5 into 2 18 into 2 so this is x into 5 by 18 meter per second तो जेते बेले भी गोटे स्पीड टे जदी किलोमीटर पर आवर रे जदी अछि ताले मोर काम हला कोन मु खाली ताको 5 by 18 रे खाली मल्टीप्लाई कर देबी देन आई विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकंड जदी हम एग्जांपल ने कि जदी देखिबा जदी मते को जगह रे लिखा है जे 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू डेक्स मीटर पर सेकंड then I can answer yeah 36 into 5 by 18 meter per second it implies that 10 meter per second माने मु घंटा को 36 किलोमीटर ट्रैवल करे कहबाटा जहा मु सेकंड को 10 मीटर ट्रैवल करे से कहबाटा से रिवर्स हमें करि परिबा गोटे पिंपुडीटे 1 सेकंड 10 मीटर ट्रैवल करे कहबाटा जहा 1 घंटा रे 36 किलोमीटर ट्रैवल करिबो the reverse will work जदी को जार जदी मीटर पर सेकंड दे जस्ट वी हैव टू शिफ्ट दिस 5 by 18 सो मु एठी पूरा फाइनली गोटे रे लिखि दोची विल कंक्लूड दिस x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x into 5 by 18 meter per second and x meter per second equal to x into 18 by 5 kilometer per obviously kilometer per hour जो वैल्यू टा रहबो से एक्चुअली बडो वैल्यू टा रहबो बिकॉज़ तमे सेकंड को यदि 10 कहू जो घंटा को ताले इट शुड बी ग्रेटर देन 10 तमदे मने रखै त जेते बेले हम छोटो यूनिट को कन्वर्सन करू जे हम छोटो फ्रैक्शन ना मल्टीप्लाई करिया बिकॉज़ वी हैव टू फ्रैक्शंस one is 5 by 18 and another one is 18 by 5 तो जदि मते छोटो यूनिट रे कन्वर्सन करिवार अछि आई हैव टू मल्टीप्लाई द स्मॉलर fraction is a factor and जदि मते बडो यूनिट रे कन्वर्सन करिवार अछि then I have to multiply the larger fraction is one of the factor so these are the two things actually we have to keep in mind one is whenever you are solving the question there should be an balance between the units harmony there should be in the harmony unit माने सबले ठीक से रहबे केन नहीं ना अछि when the distance will be in kilometer time should be in the hour if the distance is in meter then the time will be in the second in case यदि को जगह रे देई दे mile per hour भी actually will face that unit also mile per hour that means distance should be in the mile and time should be in the hour
बेले बेले मीटर पर मिनिट में हमें फेस करि पारू एट दैट टाइम द डिस्टेंस विल बी इन मीटर एंड द टाइम विल बी इन मिनट and otherwise these two units are most frequently used in the time speed and the distance chapter. So जेतेबेले हमें ताहले फर्स्ट दुईटा जिनस मन रखा फर्स्ट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द यूनिट बिकॉज़ डिस्टेंस टाइम अनुसार हमें स्पीड को बैलेंस करबा और स्पीड अनुसार डिस्टेंस टाइम को एंड द सेकंड थिंग इज कन्वर्शन मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट विल मूव टू वन मोर थिंग. समस्तकर मने थो जेतले परसेंटेज जेतले पढु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आमे परसेंटेज रे गुटे रिलेशन मु सेटे लिखिथिली z equal to x into y. In arithmetic we have learned two equation like that. One is z equal to x plus y, other is z equal to x into y. जो जगह z equal to x into y हम सेठी प्रोडक्ट कांसेप्ट पढिथिले सक्सेसिव भी आनिथिले सेठी एंड जो जगह x z equal to x plus y थिला से जगह हम एक्चुअली एलिगेशन पुट करथिले. नहीं सो गोटे रिलेशन सेठी पढिथिले समस्तंगर मने थिबो इफ दिस इज एक्सपेंडिचर देन आई हैव रिटन दिस ए प्राइस इनटू क्वांटिटी. हमें अलगा टाइप करिथिले जोटा कि एरिया हला बहुत जिन हम पढिथिले मेंसुरेशन पुट करिथिले टोटल रेवेन्यू इक्वल टू भी नैथिले बट एक्सपेंडिचर जेते बेले कांस्टेंट थिला प्राइस और क्वांटिटी भीतर के रिलेशन थिला नंबर रिलेशन थिला. एग्जैक्टली सेमिति तमे एठी गोटे जिंस देखो the distance is equal to speed into time. That means so far as the distance is constant, distance ta jodi actually constant jodi he gala then speed is inversely proportional to time. So we can say that if speed change in the ratio a is to b, time will change in the ratio b is to a. केते बेले दिले कांस्टेंट थिबो जदि कांस्टेंट जदि नाही हमें ताहले काली जेमि गोटे क्वेश्चन करथिले सुगर वाला जो सुगर एक्सपेंडिचर 8% बढ़िबो कांस्टेंट के ही रहउ नथिले दैट मींस वी हैव यूज्ड द मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट फार्मूला में लगोथिले प्रोडक्ट कांसेप्ट लगोथिले z को भी गोटे रेशियो रे x को भी गोटे रेशियो रे y को हमें से रेशियो रे रिवर्स कर दोथिले रेशियो चेंज करी जो जगह रे कांस्टेंट थिबा कथा मु कहि. So whenever the distance is constant then speed and time are in the inverse relation. मते गोटे कथा बे कहला गोटे इन सम केवल एठी सिखेबार अछि टाइम जदी कांस्टेंट जदी हे जाय टाइम जदी कांस्टेंट हे जाय ताले स्पीड और डिस्टेंस भीतर के रिलेशन रहबो डायरेक्ट रिलेशन रहबो कोन पय मते जने कहला तो 2 घंटा ही ट्रैवल कर बाकी जेते स्पीड रे जाउ जा वेरी सिंपल थिंग. तो जदि मते ताहले जने 2 घंटा कहला ताले 60 स्पीड गले मु 120 कवर करी जने 4 घंटा पे ट्रैवल करा 60 जो 240 जने 5 घंटा पे ट्रैवल कला 60 50 350. सो एज द टाइम इज फिक्स टाइम जेतु इल फिक्स अछि जेतु 6 घंटा रे that means the more time you will travel the more distance the more speed you will travel and the more distance you will cover. हमें जेते बेसी स्पीड रे जीवा ताला हमें सेते डिस्टेंस इजिल अधिक कवर करबा. So if the time is fixed then there is a relation direct relation between speed and distance. Speed actually constant actually बहुत कम जगह रे थाई and that is also direct relation. तम गाड़ी रो स्पीड मन कर जदी कांस्टेंट रखि देला 80 की 90 स्पीड रे तो जेते अधिक टाइम जीवो ताले एली सेते अधिक डिस्टेंस कवर करिवो. इट्स ए सिंपल थिंग या. सो गोटे इंस खाली हम मने रखबा जोटा हम रेड कलर रे मार्क करी दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम. स्पीड आउट टाइम भीतर ही केवल इनवर्स रिलेशन रहइबो बाकी समस्त रिलेशन एक्चुअली डायरेक्ट हबो. सो फार एज द थर्ड कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट जेते बेले आ गोटे पार्ट जोटा थर्ड वेरिएबल डाइली कांस्टेंट थिबो. क्लियर समस्त रहते तो यस सर नॉर्मली हमरा डिस्टेंस टा कांस्टेंट था ना डिस्टेंस नले टाइम भी गोटे डेरे था हम क्वेश्चन बाकी स्पीड एक्चुअली आसे नहीं मु एमती बेसी फेस करिनी एंड जो जारे स्पीड कांस्टेंट तो किछि न तम 80 स्पीड रे जाउ जदी 9 घंटा ट्रैवल करले एती कवर कर जे एती घंटा ट्रैवल करे आमी दउ केते घंटा ट्रैवल करिया को पड़ियो. सो एती वीडियो एक्चुअली नहीं बट टाइम भी कांस्टेंट था हम क्वेश्चन करिया जो रिलेटिव स्पीड आसीबो सेती काम रे आसी जबो. क्वेश्चन को जीवा है धीरे धीरे
See, number 1. A train is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds will it take to cover a distance of 4 by 5 km? Please try to understand. मुझे time मांगीजे. Time equal to distance by speed. So distance it केते जी देखो 45 km per hour. I am writing here 45 km per hour. That is 4 by 5 km. And that's good. So I am writing here 4 by 5 whole divided by this. Sorry, इरा के दीजिए 45 km per hour. एबे जो टाइम टा जो बाहरिबो टाइम टा कोथरे बाहरिबो hours किलोमीटर पर आवर टाइम टा कोटे किलोमीटर पर आवर हो जी hour सॉरी आवर रे बाहरिबो बाकी मते मागी जे कोथरे सेकंड रे तो फास्ट रे मु कंफर्म बे तो आवर को मते सेकंड करिवार अछि दैट मींस आई विल मल्टीप्लाई 3600 1 घंटा इक्वल टू 3600 सेकंड सो नाउ आंसर विल बी 4 by 5 into 45 into 3600 and 45 eta 8 5 40 8 16 5 gale 16 so this will be equal to 64 seconds. Voice audible though clearly? yes sir यस सर That's good. Number 2. A man crosses a road of 250 meter wide in 75 seconds. His speed in kilometer per hour. So speed will be equal to distance by time. 12 किलोमीटर Distance is 250 and this is 75. Answer कोथरे आसीबो जदी एतके मु लिखि देली मीटर पर सेकंड That's good. It will, because distance a meter is time the second is so it will be in the meter per second. But I need the answer in the kilometer per hour. That means I have to multiply the 18 by 5. So this will be equal to 50 रे काटिबा एक्चुअली 25 2 ना 25 3 3 6 को it will be 12 kilometer. Sorry, per hour. तीन नंबर हम सब पढ़ी सारी तुम देखिबो कि किछि भी डिफिकल्टी फेस करबोनी एक्सेप्ट द लैंग्वेज हम खाली बुझी जेबा जो जाय न बुझिबो भी हम बतै देबी यू कैन सॉल्व योरसेल्फ एक्चुअली. Number 3. A train starts from a place A at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. If the speed of the train is 40 km per hour, find the distance traveled by the train. Distance will be equal to speed into time. And the speed is given in kilometer per hour. 6 a.m. ru 4:30 p.m. कितने घंटा रो बस 10:30 या 10:30 घंटा रो रास्ता. Then time will be 10 and half. So it will be equal to 420 kilometers. Am I right? yes sir यस सर 40 10 400 10 घंटा को 400 जीव आ 2 घंटा रे 20 जीव. So it will be 420. In covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio 3:4. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. The time taken by A to reach the destination index. देखो मु जानी नि कार टाइम केते. Let me solve first the traditionally. So that is the method 1 आमे जीवा unique method रे unique solution आमे करिया. A and B रो speed रो ratio A is to B. Let speed of A is 3x kilometer per hour and B रो speed है 4x kilometer per hour. Speed रो जना पड़ुजी in covering a certain distance. दी जन जाको समान distance cover करू जनी speed अलगा अलगा. That means जार speed अधिक थिबो से थाले कम टाइम नेबो जार speed कम थिबो से अधिक टाइम नेबो. In this questions A will take more time and question directly be mention करा है
that the time taken by A is 30 minutes more than B. No. Now you see. एबे हमें कौन करिवा मु लिखिबी डायरेक्ट से इक्वेशन को A रो टाइम माइनस B रो टाइम 30 minutes को मैं हाफ आवर लिखि दउ छी because speed is given in the kilometer per hour. We don't know the distance. Let the distance is D. Suppose I am taking the distance is the D. Same distance को A को कितने टाइम लगेगा D by 3x. And same distance को B को कितने लगेगा D by 4x. तांका भीतर gap कितने होला तामने half. If you will solve these questions, then you will get denominator will be actually 12x. So this is 4 minus 3. This is equal to D by 12x equal to 1 by 2. Nothing but D equal to 6x. Kothre ye baharibo definitely kilometer. Because speed ta kilometer per hour, time ta already hour अछि. तो मु distance पाई गली 6x kilometer. एबे मु कोन करिबी A रो टाइम मते एक्चुअली मागी थला. A रो टाइम टा कोड एक्चुअली फास्ट टा D by 3x. 4x 9 3x. So this means equal to time of A is equal to I can write down now 6x divided by 3x is equal to 2 because this is our this is the simple आमे ए जगह डिस्टेंस बाहर करि परिबा नाही बिकॉज़ सबले मन रखि त दी जनकर स्पीड रो रेशियो जानि गिरी तमे केबे भी डिस्टेंस बाहर करि परिबो नाही कोनोसी यारे भी लगेबनी to find out the distance we need always the exact value of the speed and the exact value of the time कोनोसी ए दीटारु स्पीड आउट टाइम रो दीटारु कोनोसी टारो भी जदी तमे रेशियो जानि जा बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू then you cannot find the actual distance ratio bahar kari paribo speed ratio into time ratio that will be equal to give rise to the distance ratio because product re padibo speed into time equal to distance but you cannot find out the exact distance eta to mone rakhita because बहुत पिला भूल apply कर दियंती हमें देखिबा जे जोटी जे क्वेश्चन लंबा थियो ता भीतर जे बाहर करे हे जाय माने unknowingly actually हे जाय हमें भी जानि परनु but we have to be cautious at that time. But a question से हमें कौन करि परिबा what is the alternate method that we have Time Time ratio 4:3. that's good आमे सबु बेले फोकस करिबा so far as this time to distance is concerned एई चैप्टर को जदी हमें कंसीडर जदी करिबा in 99.99% क्वेश्चन रे कहीं ना कहीं एक्चुअली सबु बेले एक्चुअली समान थांते 99.9 you see the book you see the previous year question you say different mock test you can feel that one बहुत जारे इलु समान थे बिकॉज़ एमती कोनोसी क्वेश्चन इलु बनि पारेनी जोतरी तीनटा गजली वेरिएशन इलु हे जेबो सो कहीं ना कहीं समान थे मु तुमको मूलरु कोजी प्लीज प्रैक्टिस दिस रेशियो मेथड हमें जेते बड़ क्वेश्चन हेले एक्चुअली क्वेश्चन रो आधार हेले रेशियो पुट करके हमें एक्चुअली छोटो करिया सॉल्यूशन को सो हमें जदी एक क्वेश्चन जदी हम अप्लाई करिया मेथड 2 को दिस इज आल्सो वेरी सिंपल मेथड एक्चुअली मेथड 2 जस्ट हम खाली रेशियो एक्चुअली पुट करिया डिस्टेंस इज कांस्टेंट that means there is a direct relation between speed and the time it's very simple inverse yeah sorry inverse relation so a and b ro speed ro ratio se mate deiji 3:4 and the time they will take is 4:3 question ebe deiji a को b अपेक्षा 30 minutes अधिक लागु जी that means a को actually 30 minutes so 4 unit will be equal to 120 minutes we can say that this is simple. Let's move to next one. In covering a certain distance A, B and C runs at a speed of 2:3:5. A takes 18 minutes more than C. Time taken by B to cover the same distance is the same thing here. So distance is constant. So speed of A, B and C are in the ratio 2:3:5. Time will be in the 15:10:6 15:10:6 that's good देखो
केही भी उल्टे देबोनी आमे जानी जे तीनटा रे देले आमे उल्टे परिबानी सहज बिकॉज बी तो भाई मझिरे ही रहइबो एपटे गले भी बदलिबोनी एपटे गले भी बदलिबोनी तो सेति में तमे कहरे आमे रिवर्स एक्चुअली करू आमे जानी जे एक्चुअली 2a = 3b = 4c एक्चुअली हे गले भी आमे एक्चुअली बहुत वर्ष जानी जे मने करा जो देखो बहुत बड़ी सिंपल जिंस देखो ए मने कर 1 घंटा नौ जी बी सपोज b घंटा c सपोज c घंटा ताले 2 स्पीड रे जीवो 2a ये 3 स्पीड रे जीवो 3b 4 स्पीड रे गले 4c स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस सब जाक समान ताले एबीसी केमती बाहर करिवो रे इक्वल टू हमें गोटे एज्यूम कर दोथले 12 ये 6 ये 4 ये 3 एग्जैक्टली सेमती यू कैन एज्यूम द डिस्टेंस जेहेतु डिस्टेंस जेहेतु समान अछि सो एज्यूम द डिस्टेंस इज द 30 हियर यू कैन बहिरे एटा भी पाई परिबो 1/3 1/5 दिस इज आल्सो ओके फाइनली तो एलसीएम ने ही काटिबो तो मूलर भी हम डिस्टेंसली 30 नहीं जाउ जे so this will be 15 this will be 10 this will be 6 that's important in 2017 chsl or 16 chsl exactly मोर मन ना you will see the each and every shift of the प्रत्येक शिफ्ट रे ଗୋଟେ क्वेश्चन एली पडितला प्रत्येक शिफ्ट रे तीनटा रेशियो नि बट इट इन द chsl now you can compare now a takes 18 minutes more than c 15 और 6 रो गैप 9 अछि 9 यूनिट को 18 minutes time taken by b to cover the distance 10 unit को 20 minutes answer number 6 P and Q started from the place A at the same time and reaches place B at an interval of 12 minutes दी जण तामने समान डिस्टेंस कवर कले ए रु बाहरिले बी रे की पहुंचिले बट इंटरवल 12 मिनिट जार स्पीड अधिक आसीबो से कोने 12 मिनिट आगु पहुंचे if their speeds are respectively 18 km per hour and 24 km per hour then find the distance between A and B सॉल्व करी जे देखो एक्चुअली पिला कोन एक्चुअली मिस्टेक करनती मु तमु इटे कोशिश कर दो जे माने अननोइंगली एक्चुअली हेई जे केही भी जानि करनती नि ऑप्शन रे जदी सेटा देइथो भूल आंसर देन भाग्य खराब दा पर चेक करिवा देखिबा P and Q रो मते से स्पीड देई जे गोटे 18 किलोमीटर पर आवर आमे गोटे 24 किलोमीटर आमे कोन हो कि माने एक्वेंटेड हे जे तो ना आई विल कट सिंपली दिस विल बी 4 स्पीड रेशियो वर्तमान टाइम रो रेशियो एक्चुअली केते हे जेबो 4:3 as per the questions दीटा भीतर गैप 12 मिनिट तामने जणा पड़ी जे पी ताहले जे अधिक टाइम नै जे बिकॉज़ ये 4 यूनिट टाइम नै जे माने तार स्पीड एमती भी देखो कम अछि सो 1 यूनिट को 12 मिनिट हला जहार हम गोटे टाइम एक्चुअली मु बाहर कर दउ जे 4 यूनिट को 48 मिनिट तो मो माइंड एतकी बेल कोइले काम करे नै एक्चुअली जेला मते डिस्टेंस मागी दउ जे मु सीधा एक्चुअली 4 * 48 कर दउ जे करी करी तमे 48/60 ही एक्चुअली करिवो सो 3.2 किलोमीटर बाहर कर दो एपडे देखला को ऑप्शन एक्चुअली नथिबो बिकॉज़ स्पीड इनटू टाइम करबा किंतु आमे एक्चुअली भूली जाउ जे गोटे जिंस अछि या आमे स्पीड रो आमे एक्चुअली रेशियो एक्चुअली पुट कर दउ जे दैट इज रॉन्ग बिकॉज़ जने जाउची 48 मिनिट ट्रैवल करू जे ठीक अछि आमे सेटा ठीक बाहर कले भाई बाकी तमे तो कहि पारिबोनी जे जने 18 घंटा जीवो जहा 18 स्पीड रे जीवो जहा 3 स्पीड रे जीवो से इट इज रॉन्ग सो एई हैबिट एक्चुअली रखनी बरंग नहले तमे नहले गोटे काम एक्चुअली करो दैट इज आल्सो गुड जदी का जदी प्रॉब्लम जदी होउची मु कर दउ जे रो in case you face any problem just you reverse the ratio but you don't cancel out that one बतो जेले कोन आमिल करि परबा एसो जिंस को अवॉइड करिया पे सो डिस्टेंस विल बी ना 48 मिनिट बोले केते 48/60 घंटा इनटू p रो स्पीड को मते पुट करिया को पड़िबो दैट इज 18 सो कैंसिल एबे करि परबो 3 चौको 10 चौको एटा 48 30 144 माने 14.4 किलोमीटर एक प्रॉब्लम को जे अवॉइड करिया पई वी कैन यूज एन अल्टरनेटिव व्हाट द अल्टरनेटिव एक्चुअली जे p आउ q रे जो स्पीड दो जी डोंट कैंसिल आउट द स्पीड वेल म्हणजे डिस्टेंस मागु जी मागुर जानू जी सॉरी
18:24 जस्ट यू रिवर्स सेम जिनस करू जोटा कि आम आगु न कैंसिल करी परे करे 24:18 एठी करी एठी काटी दिया सो 1 को जदी 12 हला 4 को 48 तो एबे जदी हम कैंसिल करिनु ताले 18 डाइले हम माइंड डेली सब वाले रही जेबो सो दिस विल बी 48/60 into 8 अब तुम तो काटिला परे भी यदि ठीक से रखी पार जो देन कांग्रेचुलेशन दैट इज ग्रेट एक्चुअली नले एग्जाम हले एक्चुअली बहुत बड़ मिस्टेक नै मु देखि जे मैक्सिमम पिला करन मु बहुत थर करी सेति तुम आगरो एक्चुअली बी केयरफुल एक्चुअली बिकॉज़ सब जाको परसम नले पळेबो रेशियो करी करी आसीबो एटा सिन छोटो क्वेश्चन बेले बड़ क्वेश्चन भी सेम मिस्टेक हे जे सो लास्ट आर को बाहर गला किछि नथिबो बिकॉज़ मझिरे तुम भूल बाहर कर देथबो ना ताको अप्लाई करी करी पळेबो लास्ट जे सो द आंसर विल कम टू राउंड बुझी पारजो ना कोन कहू जी Again, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we can move to the next. A train and a car starts from a place A at the same time and reaches B at the same time. दोहे गोटे टाइम रे बाहर की गोटे टाइम रे ही पहुंची जंदी. The speed of the train is 80 km/h and that of the car is 60 km/h. If the train halts for 20 minutes on a station, then find the distance between A and B. Same question. किए थी बेसी टाइम नौ जी? Anybody please? Car. Uh, Obviously car because train देखो बाटरे 20 मिनिट sir. हॉल्ट है माने 20 मिनिट रही जी तथापि भी सेम टाइम रे पहुंची जंदी यदि रही जदी न थांदा ताहेला कार अपेक्षा 20 मिनिट ताहेला शीघ्र पहुंची थांदा सो स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार इज इन द रेशियो 80:60 so time will be in the ratio 60:80 now you can cancel out this is 3:4 एक यूनिट को 20 मिनट 3 यूनिट को 60 मिनट कहार टाइम एटा ट्रेन रो दिस 1 आवर एबे देखो एतार मीनिंग एक्चुअली कोन ट्रेन ता जेते बेले 80 स्पीड रे ता माने जीवन नॉन स्टॉप ताकू ताले गोटे घंटा ता माने लागिवो सो व्हाट इज द डिस्टेंस 1 into 80 equal to 80 किलोमीटर बुझिएला देखो दी जनक स्पीड रो रेशियो केतेला 80:60 माने टाइम रो रेशियो हो 60:80 सो दी जनक टाइम रो रेशियो 3:4 गैप हला 20 मिनिट माने केते बेले ट्रेन ता जदी रही जदी न थांदा सेई लाइन ता बुझो ट्रेन जदी रही न थांदा ता माने 20 मिनिट आगरु ताले पहुंची जे थांदा टाइम हम बाहर कोले 1 को 20 ले 3 को 60 4 को 80 हो ट्रेन ता माने 60 मिनिट माने गोटे घंटा टोटल टाइम लिए सेटी को ट्रैवल करिया पे एंड कार टोटल इलो 80 मिनिट मु जहारो टाइम बाहर करबी तारो स्पीड मल्टीप्लाई कर दिले डिस्टेंस पाई जेबी तो मु ट्रेन रो टाइम एक्चुअली बाहर करी जे 1 घंटा स्पीड जानी जे 80 एंड 80 km/h 1 आवर माने 80 किलोमीटर ही जीवो सर यू कैन ऊपर जो सेम टाइम दिला कोन पाई को टाइम दा जो ए ट्रेन जो सेम टाइम रे दुई जण पहुंचले माने कोन दुहे समान टाइम रे मनकर 12 टा रे बाहरी दियो मने कर ताले गोटे रे ही पहुंची दियो दुहे जाको नहीं ओके टाइम समान नो नांदी घंटा टाइम हिसाब सेम टाइम रे पहुंची स्पीड अलगा ए नंबरटा करके देखेला के ए क्वेश्चन 2018 रे भी एक्चुअली आसी जे ना खाली अलगा अलगा देतेला 2018 रे भी आसी जे आगरो भी एक्चुअली माने मॉक टेस्ट मन को आसुदेला से सीजन सर को जो 20 मिनिट गैप देला तो सेटर किसी काम नहीं कले ना 1 को 20 करके सिना 3 को 60 आनी जी गैप रे नहीं 3:4 जो बोले 1 को 20 कले नहीं से 20 का सेट है अच्छा
ବାହାରିଲା କାର 12 ବାହାରି ଯାଉ କାର କେତେ ଦେଖ बुझी जाइए भल से मु कर देख शॉर्टकट लगे आम कर रेशियो ही तामने वी आर लर्निंग द टाइम स्पीड डिस्टेंस बेसी किसी पैटर्न क्वेश्चन को आसीनु से अमित टेक 12 minutes more than Sujit to cover a certain distance. However, if Amit doubles his speed के double कर जी अमित, then Sujit takes 3 minutes more than Amit. लॉजिक बुझ आगरू अमित 12 मिनिट अधिक नौथला एबे सुजित 3 मिनिट अधिक नै गला दीटा भीतर डिफरेंस एक्चुअली अछि तो जेते बेले अमित आई एम राइटिंग दिस थिंग्स फॉर अमित तार स्पीड ता डबल कला आगरू 1 स्पीड हला बे 2 हबो ता माने से जो डिस्टेंस जो कवर करूथला ता कंपेयर एबे टाइम को हिसाब रे चेंज हबो 2:1 ताले तमे एबे निजे एबे कुह अमित तार स्पीड जेहेतु डबल करी देला ताहले तार टाइम रे केते चेंजेस आसी गला माने आधा ही जो ना हां से तो आधा हबो दैट इज समथिंग डिफरेंट बट केते मिनिट रो चेंज आसला जदी मु पचार 15 मिनिट 15 मिनिट दैट्स गुड 15 मिनिट या बिकॉज़ आगरू अमित 12 मिनिट नौथला एबे सुजीत ता पे अधिक नला इनडायरेक्टली अमित ता माने 15 मिनिट ता माने सेव करी देला जदी कहि थांदा अमित आगरू 12 मिनिट अधिक नौथला एबे मनकर 3 मिनिट अधिक नौची ताहले हमें 9 मिनिट करी थांदे बट नाउ सुजीत टेक्स 3 मिनिट्स मोर दैट मींस अमित नाउ टेक्स 3 मिनिट लेस देन द सुजीत तो दी जन को भीतर जो गैप हे गला ताहले 15 मिनिट रो हे गला जस्ट मुठी रफ रे टी लिखि दउजी जई तुम माइंड जे कंफ्यूजन आसीबो देन अमित फास्ट वर्तमान नोतला फास्ट s + 12 वर्तमान नोजी केते नोजी s - 3 so the gap between these two time is that is the 15 minute so मैं कहि पारिबी एक यूनिट रो वैल्यू 15 मिनिट so 2 यूनिट रो वैल्यू 30 मिनिट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए हम कोन करिया पिन जाउजी एटा हला ताने 30 मिनिट रे को स्पीड रे ओरिजिनल स्पीड रे वर्तमान स्पीड रे जदी मते दरकार मु ताले 1 पकेबी तो अमित ताहले से डिस्टेंस को कवर करिया पे अगर 30 मिनिट नौथला और हाफ आवर क्वेश्चन कहू जे if the distance they cover is 12 kilometer find out the speed of Amit so speed will be equal to definitely this is distance by time हमते भी जाना पड़ी 24 किलोमीटर की आधा घंटा रे कवर कर दोथला माने स्पीड केते थिला ताहले 48 किलोमीटर पर आवर जदी सेम क्वेश्चंस रे जदी मते सुजीत रो स्पीड जदी पचरा जाय if I try to find out the speed of Sujit I need the time of Sujit so what will be the time of Sujit अमित रो टाइम आगरो केते थिला 30 बट एटा एक्चुअली 18 12 मिनिट अधिक थिला सुजीत कंपेयर सो -12 कले आई विल गेट 18 मिनिट एबे मु बाहर करि पारिबी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम दिस इज 24 बाय 18 बाय 60 so this is equal to 24 into 60 by 18 this is 6 3 3 बोले 80 किलोमीटर पर आवर हेतांदा सर ये जो जेला कि नहीं सर से रेशियो टा 1:2 केन चला डबल ही स्पीड दे जे अमित डबल ही स्पीड ओ माने सारी स्पीड टा सेकंड है सर या देखो अमित डबल स्पीड अमित आगरु जेते स्पीड रे जाउतला एबे तामने ता स्पीड से तामने डबल गला वी आर राइटिंग दिस ओनली फॉर अमित एटी सुजीत रो इन्वॉल्वमेंट किछि भी नहीं सुजीत खाली एथि पई देजी ओडे टाइम रे तामने खाली कंपैरिजन करिया सुजीत अपेक्षा आगरु 12 मिनिट अधिक अब 3 मिनिट कम जो 15 मिनिट पाउजी सेति पई हम केवल सुजीत को यूज करू अदरवाइज जो रेशियो देजी इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द अमित ओनली आकु जे बढ़िबा कार डाउट ला यू कैन आस्क because this is a very important question is sir
तो मैं एमिति तापस कर जे 24 को 2 रे डिवाइड कर देली तापस को सर तापस is ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ କହିବେ ଯୋଉ s+12 s-13 ଟା ସାର୍ ଆଥର ओके देखो देखो सर जो 15 मिनिट रो गैप आनी जे मु बाय चांस भूली गेली मु सेटा तुमको लिखि देई माने अमित रो टाइम टा सुजीत रो टाइम अपेक्षा को 12 मिनिट अधिक थिला दैट मीन सुजीत जदी s मिनिट नौ जे अमित ताले s + 12 मिनिट नेबो एंड वर्तमान सुजीत रो टाइम रु 3 मिनिट कमी गला बिकॉज़ वर्तमान सुजीत अमित अपेक्षा 3 मिनिट अधिक नौ जी ताले नाउ द टाइम ऑफ अमित बिकम s - 3 मिनिट so what is the gap between this +12 - 3 that is definitely 15 minutes बुझिएला यस सर okay let's come to the next question. This is also very famous question in all the competitive exam. Very simple exam. को के नेटवर्क प्रॉब्लम थिला तो कटि गेथिले टिके आउथरे बुझिए ओके देखो क्वेश्चन कहि जी कोन देखो गोटे पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करबा पई अमित आगरु सुजीत अपेक्षा 12 मिनिट अधिक नउतला अमित जदी तार स्पीड जदी डबल जदी करि दै थांदा ताहले सुजीत अपेक्षा 3 मिनिट तामने अधिक नै थांदा और हमें कहि परिबा अमित सुजीत अपेक्षा 3 मिनिट तामने कम नै थांदा सो इनडायरेक्टली आगरु अमित 12 मिनिट अधिक नौजी सुजीत अपेक्षा एबे 3 मिनिट एबे तामने कम नेला तामने केते मिनिट रो इंप्रूवमेंट ताहले आसिला दैट इज 15 मिनिट रो इंप्रूवमेंट केते बेले ना अमित तार स्पीड को देला डबल करूजी सो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द अमित चेंजेस इन द रेशियो 1:2 whereas the time will be in the reverse ratio that is 2:1 आगु जदी 2 यूनिट रो टाइम नथला एबे ताले 1 यूनिट रो टाइम नेबो एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 15 मिनिट सो जदी 15 मिनिट रो ताले दी इंप्रूवमेंट हे गला तो आगु केते यूनिट 2 यूनिट दैट इज 30 मिनिट आगु ताले आधा घंटा टाइम नथला कवर करया भी कि अमित आधा घंटा रे केते किलोमीटर 24 किलोमीटर सो आधा घंटा रे 24 किलोमीटर में स्पीड तारो केते गला ताले 48 किलोमीटर पर आवर जस्ट एक्चुअली ए जे लेमन एक्चुअली आमे सॉल्व करा जेंदी एसआई रे भी करूथिला आमे आकु से लैंग्वेज यूज करिया कंप्लीटली पूरा ता माने आउट ऑफ द मैथमेटिक्स आमे सबले एंदी फार्मूला पकई करबानी जस्ट 30 मिनिट माने आधा घंटा रे जने जला 24 किलोमीटर ता स्पीड ता माने थेबो 48 किलोमीटर तो सेकंड पार्ट रे मु जो बतै जो ग्रीन कलर रे टिके तार सेठी मु कहि जदी सुजीत रे जदी केतला हमकु पचारी दे देन आल्सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर केमिति अमित रो ओरिजिनल टाइम थला 30 मिनिट बट से 30 मिनिट ता सुजीत अपेक्षा 12 मिनिट अधिक थिला 12 मिनिट अधिक थिला ता माने सुजीत ताले केते मिनिट नउथला ताले 18 मिनिट नउथो एंड दैट 24 किलोमीटर को 18 मिनिट माने स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर okay now see walking at 3/4 of his usual speed तमे निजे कहला जने तार यूजुअल स्पीड 3/4 एबे ट्रैवल करू जे व्हाट इज हिज यूजुअल स्पीड 3 की 4 yeah that is the original yeah speed this is the usual this is the new so this is 4:3 best सब will have usual up पर जे लागियो that will be usual so time will change in the ratio 3:4 walking at 3/4 of his usual speed a man is 1.5 hour late usual time to cover the same distance केते अगर 3 स्पीड 4 स्पीड है 3 स्पीड टाइम चेंज इन द रेशियो 3/4 so 1 यूनिट को 1 फुल 1/2 ओरिजिनल टाइम केते 3 यूनिट को केते हबो डेड 3 हला 4.5 दिस इज 4 and 5 आंसर तुम देखो प्रीवियस ईयर मोर देन 10 years you will get this question more than 10 years in the SSC examination walking at 1 full 1/6 times of its usual speed that is 7/6 times a man is 10 minutes earlier so speed change in the ratio 6:7 usual is 6 new is 7 then time will change in the ratio 7:6 usual time पचारी एक को जदि मन 10 मिनट हे जाए then 7 unit will represent the 70 minutes or you can say that this is 1 hour 10 minutes we'll choose according to the questions केते हबो को
8 केते केते 8 ओके थैंक यू गुड देखो बहुत सिंपल ए ट्रेन या रनिंग एट 7/11 of its own speed reaches a place in 22 hours ताहले स्पीड रो रेशियो होबो केते 11:7 टाइम रो रेशियो होबो ताहले 7:11 जणे 22 घंटा रे पहुंची जाउची सेटा इंपोर्टेंट आगरु 7 यूनिट टाइम लागुतला एबे 11 यूनिट क्वेश्चन कहबा हिसाब रे एबे ताने 22 घंटा रे पहुंचुची दैट मींस 11 यूनिट को ताहले 22 घंटा हे गला दिस इज द न्यू टाइम व्हाट इज द ओरिजिनल टाइम दैट इज 7 इंडिविजुअली तमे बाहर करि पारिबो 11 यूनिट को 22 घंटा 7 यूनिट को 14 घंटा बट हमको सेफ कथा पचारे ताले 4 यूनिट सेफ हे जे 4 यूनिट को 8 4 11 को 2 हला 1 को सॉरी 11 को 22 1 को 2 4 को केते होता है 8 घंटा बहुत सिंपल एबे नाउ कम टू द कांसेप्ट ऑफ द एवरेज स्पीड आसीबा एबे हम धीरे धीरे एवरेज स्पीड रो कांसेप्ट जिलो कोठो आसीला कोन पे हमको एवरेज स्पीड दरकार स्पीड द स्पीड हम जानी जे देन व्हाट इज अगेन द एवरेज स्पीड देखो नॉर्मली हमें कोन होय देखो तमे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को गलो केते स्पीड रे पाखा कि तू गलो हमें कहि दोसी न 60 स्पीड रे हमें गले पाखा बाकी देन जे ट्रैवल कर जी से एक्चुअली जानी जी केते जगह रे तार कोंटा 10 को भी खसी थिबो हां कि नहीं केते जगह रे 70 केते रे 80 भी हितो आ जो बलिया गाड़ी बाहलानी पिला तो 100 ऊपर भी मान ले तो हमें ताहले गोटे इंस तो एवरेज स्पीड रो कांसेप्ट ताहले एठी पे आसिला देन देयर इज नो कांस्टेंट स्पीड व्हेन यू आर ट्रैवल आमे तले गोटे डिस्टेंस टाइम ट्रैवल करी जे कोनोसी स्पीड रे तामने हमें कांस्टेंट ट्रैवल करि पारुन दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड सो जेमति स्पीड रो जेमति हमें फार्मूला हमें गोटे डिस्टेंस बाय टाइम एक्चुअली बाहर कर दे स्पीड रो फार्मूला हे गेला डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम अगर हमें जानि नो माने एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस ता सिनो जानि जो बाकी वी डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट द टाइम सॉरी माने को डिस्टेंस केते स्पीड रे सब फ्लक्चुएट एक्चुअली है सो पर्टिकुलर डिस्टेंस में पर्टिकुलर टाइम एक्चुअली हमें जानि एट दैट टाइम हमें गोटे इनसया कर दवा कोन भाई जोटा हमें जानि छे टोटल केते डिस्टेंस कवर करी जे टोटल केते टाइम मने करा जो मु 80 किलोमीटर उडे डिस्टेंस कवर कर जस्ट ए सिंपल एग्जांपल लेट मी टेक द एग्जांपल विल बी क्लियर दिस इज फर्स्ट 20 किलोमीटर then another 50 kilometer last have 10 kilometer जो 20 किलोमीटर फास्ट मिले बहुत स्पीड रे जाई छी ए 50 किलोमीटर 80 स्पीड रे जाई छी लास्ट 10 किलोमीटर मोर गाड़ी 10 हे जी मुठी ना 40 कोई पारिबी ना 80 कोई पारिबी ना 10 काई कोई पारिबी बट हमें केते कोई पारिबा देखो मु टोटल जो 20 किलोमीटर को जो 40 स्पीड रे जाई मते खाली आधा घंटा लागि थिबो 50 किलोमीटर जो 80 स्पीड रे जाई थिबी एठी मते 5/8 आवर लागि थिबो जो 10 किलोमीटर को 10 स्पीड रे जाई मते एठी तामने घंटे एक्चुअली लागि जाई सो वर्तमान क्वेश्चन उठो जी ताले एवरेज स्पीड मोर केते हेबो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल मु 80 किलोमीटर कवर करी छी बट केते टाइम नै जी हाफ 5/8 plus 1 LCM will be 8 ऊपर जी 8 एक्चुअली मल्टीप्लाई हे जबा एंड 4 5 9 17 जते बेटा एक्चुअली अब 600/14 किलोमीटर पर आवर एप्रोक्सीमेटली हमें कहि पारियो 17 3 51 एंड दिस 13 130 17 17 11 approximately 37.5 kilometer per hour. So this is the concept of the average speed. Total distance divided by total time. पर एटा गोसी के रखी था total distance by total time. बेले बेले कौन हुए situation? ये जो distance माने हम जो भागो जो करी जे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर distance बेले बेले जो समान है जे
तो सेते बेले हमको जे डिस्टेंस राउ दरकार एक्चुअली नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कोन कहू एठी हम बिना डिस्टेंस रे बाहर करि पारिबेनी तुमको मु किछि भी डिस्टेंस देई पारिबिनी तुमको मु कहबी किछि डिस्टेंस तुम 40 स्पीड रे गलो आउ किछि डिस्टेंस 80 स्पीड रे गलो आउ किछि डिस्टेंस 10 स्पीड रे गलो एवरेज स्पीड बाहर करो केबे बाहर करि पारिबोनी अनलेस एंड अनटिल यू नो दिस 20 50 एंड otherwise at least you take the ratio also because हम जानि जे न्यूमरेटर रे जे भी रहबो तार इजली हम एठी रेशियो मागिली बाहर कर दे परि चलिबो बट बेले बेले क्वेश्चन रे इजली कोन दे ना डिस्टेंस इक्वली मते देई दे डिस्टेंस देई दे केमदी ना इक्वल डिस्टेंस देबो जेते बेले दीटा इक्वल डिस्टेंस कवर हो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट गोटे डिस्टेंस लेट दिस d डिस्टेंस s1 स्पीड गला लेट दिस d किलोमीटर s1 किलोमीटर पर आवर and again equal distance the d kilometer s2 kilometer per hour at that time the average speed will be equal to 2 s1 s2 by s1 plus s2 physics re v2 v1 v2 by v1 plus v2 sometimes the question comes in the physics also the average velocity now you see हमरा derive एबे करबा बहुत सिंपल देखो हमें फार्मूला कोन जानले एवरेज स्पीड रो डेरिवेशन कोन जानले टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ताले एई जगह रे जो टोटल डिस्टेंस एटी कवर एटी हे मते बेटा प्रूफ कर दोची जस्ट बिना डिस्टेंस में बाहर करे एवरेज डिस्टेंस दैट इज टोटल डिस्टेंस केतेला 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एबे एक्चुअली मु बाहर करबी डिस्टेंस बाय स्पीड दिस विल बी d by s1 दैट इज द टाइम फर्स्ट टाइम मिली गला सेकंड टाइम केते हेबो d by s2 d डिस्टेंस को s1 स्पीड रे गला किछि टाइम लागि थो दैट इज d by s1 एंड द सेम d डिस्टेंस को s2 स्पीड रे गला केते टाइम लागिवो दैट इज d by s2 आमी द कॉमन जदि नै जबा गोटे d देन दिस विल बी कैंसल आउट नाउ इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय s1 plus s2 by s1 s2 yeah just you reverse this one look at 2 s1 s2 by s1 plus s2 so एमिति नहीं कि हमें खाली त माने कोन छी त माने ना खाली कि दुईटा पे तीनटा पे फार्मूला 3s1 s2 by s1 s2 plus s2 s3 plus s3 s1 ए भला भी अछि 3xyz by xy plus yz plus z बट एमिति हम केते मन रखबा चारटा भी आपको आसीबो क्वेश्चन अछि हम चारटा रो करबा ओटे स्क्वायर फिलो चारि साइड चारटा एरोप्लेन हमने कवर करिवो तो एट दैट टाइम एक्चुअली द वर्क एंड टाइम कांसेप्ट इज वेरी इंपोर्टेंट हमें सेही जगह रे कोन करबा ना एलसीएम हमें पुट कर देबा इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एलसीएम पुट करबा मु तो गुड एग्जांपल ने कि बतौ जिली कोन करिवो एक्चुअली ओटे लोकोटे किछि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करी दीटा इक्वल डिस्टेंस किछि डिस्टेंस कवर कला 20 किलोमीटर पर आवर रे किछि डिस्टेंस कवर कला 30 kilometer per hour then I have to find what is the average speed of the person in the whole journey गोटे इंसो दे हम सिखी गले you can put this formula average speed जेतु 2 ता इक्वल डिस्टेंस जेतु अछि 2 s1 s2 divided by s1 plus s2 so this is 2 into 20 into 30 by 50 0 0 5 6 को 6 6 केते 24 किलोमीटर पर मु जो एलसीएम कथा कहूची we don't know the even the formula then the LCM will work more than better this one more better than this see how हमें डिस्टेंस जानि न बट हमें इक्वल बोली हमें जानि जो ताले मु कहि पारिबी सो डिस्टेंस ता एबे मु कोन करिबी ना मल्टीपल ऑफ द टाइम नै प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉरी स्पीड किछि डिस्टेंस कवर करी 20 किलोमीटर पर आवर रे किछि डिस्टेंस कवर करी 30 किलोमीटर पर आवर एंड बोथ द स्ट्रेचेस ऑफ द डिस्टेंस आर इक्वल दैट मींस वी कैन एज्यूम द डिस्टेंस 60 60 Yes, sir. पिला कोन टोटल पुनी में 60 नै जेबोनी हमें बा डिस्टेंस इक्वल नो डिस्टेंस इक्वल नो जे ता माने फास्ट 60 किलोमीटर 40 स्पीड रे जीवो या दैट्स गुड पुनी 60 इक्वल डिस्टेंस ना हम से इक्वल को से 60 नै जे 30 किलोमीटर पर आवर
तो 20 किलोमीटर पर आवर यदि 60 किलोमीटर जीव भाई 3 घंटा लगी तो 30 किलोमीटर पर आवर 60 गले 2 घंटा लगे दिस इज यूनिवर्सल मेथड फॉर ऑल द टाइप्स आइदर तीनटा डिस्टेंस चारटा देता ताले एवरेज स्पीड मु एबे बाहर कर दी पारिबी टोटल केते किलोमीटर 60 60 20 बाय टोटल टाइम है 5 घंटा सो इट विल बी 24 किलोमीटर पर जदि मते तीनटा इक्वल डिस्टेंस भी दे दबन देन आल्सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस मन कर तीनटा डिस्टेंस दे देला एग्जांपल नंबर 2 किसी डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर किसी डिस्टेंस मन कर 20 किलोमीटर पर आवर किसी डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड किसी डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर we can take the LCM 10 20 30 and 15 take the LCM this will be 60 ये 6 ये 3 ये 2 ये 4 हिसाब कर दियो 60 60 60 60 4 into 60 टाइम 4 2 6 3 9 6 15 बाय 15 16 किलोमीटर सिंपल दो चारटा भी दे दो बुझिएला कौन कहले यस सर okay so by applying this method you can go वर्तमान किछिटा केसेस जोथरे कि इक्वल डिस्टेंस मेंशन करेनी बडैली इक्वल डिस्टेंस थाए केमिते जण कहिवो ना एकुडे इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनटा साइड ट्रैवल कला तो इनडायरेक्टली से कोन कहूची तार इक्वल डिस्टेंस या क्वेश्चन कहिवो जणे गोटे जागा को जाइथबो तारो हाफ ऑफ द डिस्टेंस तामने रिमेनिंग हाफ ताहे रही गला दैट इज इक्वल डिस्टेंस जणे गोटे जागा को जीवो आ गोटे जारो पुनी रिटर्न आसीबो देन दिस इज आल्सो इक्वल डिस्टेंस जणे 20 स्पीड रे गला 30 स्पीड रे आसीला देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी देन इट इज द इक्वल डिस्टेंस तो क्वेश्चन पढी कि भी एमति ले हम किछि आंसर यू जानि परिया बिकॉज़ सबले इक्वल डिस्टेंस मेंशन करबोंदी किछि गारंटी नै तीनटा जागा रे से मते कहिबो 1/3 एंड द रिमेनिंग 1/3 दिस इज आल्सो इक्वल डिस्टेंस हेबो कि नै तीनटा 1/3 ला कोन होबो ताने गोटे डिस्टेंस ताने तीन भाग रे टोटल डिवाइड हे गला so in all these cases actually you have to consider that all these distance are equal so jodi data achi then it's good ye 2s1 s2 by s1 plus s2 hame pokai pariya otherwise we can take the LCM method but be cautious while you are applying the LCM method the working time रे हमर अभ्यास हे जी ना अभ्यास हे जी so whenever you are putting this 60 then 4 should be multiply so jodi answer jodi in case jodi wrong option jodi thibo then it will be a great problem for us देखिबा वर्तमान A person travels 600 km by train at 80 km per hour, 800 km by ship at 40 km per hour, and 500 km by aeroplane at 400 km per hour, and 100 km by cars at 50 km per hour. The approximate average speed for the whole journey is kete bahar kariba. Concept kono total distance divided by total time. Average speed is nothing but total distance divided by total time चेष्टा करिया सॉल्व करिया भाई तळे लेखो जी जागा हबोनी माने ओके सी टोटल डिस्टेंस केते 600 पुणी गोटे 800 1500 500 पुणी 100 500 2000 हबो 12 20 हां 2000 हबो एबे देखो टाइम केमदी जानिबो ना 600 किलोमीटर को 80 स्पीड रे गला 600 बाय 80 घंटा लागि थेबो यस प्लस 800 स्पीड को 40 स्पीड रे गला 800 बाय 40 500 किलोमीटर को 400 स्पीड रे जाई छी अनदर वन इज 100 किलोमीटर को 50 स्पीड रे तो हम गोटे इनसो कंफर्म ऊपर एकली 2000 ही की अछि तळे एकली 7.5 ये 5 7.5 and 5 this is 12.5 and this is 2 14.5 and this is 1.25 15.25 15 full 1 by 4 so 61 by 4 4 ला 8000 by 61 so approximate बाहर कर दो approximate कहि जी 61 की 61 डाले 19 190 183 19 1 पाखापाखि हो सर एई जगह रे जे अप्रोक्सीमेट देइथिबो हम 8000 बाय 60 करले
8000 बाय 60 हम बाहरी जीव पाखा पाखी हो चलियो कि असुविधा नहीं 60 हेले ठीक अछि 63 64 65 माने बेसी जे फ्लक्चुएट हेले ଟିକେ बेसी चेंज होय अदरवाइज जेमति बाहरी जे प्राय बाहर करि पारिबो एमति किछि भी असुविधा नहीं थर्टीन A train travels at a speed of 25 km per hour for the first 10 minutes and at a speed of 20 km per hour for the next 5 minutes. Average speed for the train for the total 15 minutes is kete? Again same concept. Total distance by total time. एटे भाई distance देइनी बाकी पाई परिबा 25 km per hour रे 10 मिनिट ट्रैवल करिवो केते डिस्टेंस कवर करिवो 25 into 10 by 60 10 by 60 नेक्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर 5 मिनिट 5 बाय 60 तो कवर हो गला ताले दुईटा डिस्टेंस 25 into 10 by 60 एंड 20 into 5 by 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आगरु 10 by 60 घंटा डायरेक्ट तुम कहि परिबो 5 मिनिट 15 मिनिट हे जो 5 by 60 so now you can solve this one this is 1 by 6 this is 25 by 6 and this is 10 by 6 so 25 10 that is 35 by 6 whole divided by एटा केते रेटा 15 by 60 माने 1 by 4 1 by 4 तो हिसाब बोले चारटा ऊपर को नहीं जाओ this is 140 divided by 6 this is nothing but 70 by 3 equal to 23.33 टा किलोमीटर अछि या आवर अछि এটা দেখো a man covers half of his journey at 6 km per hour this is the important point and the remaining at the 3 km per hour average speed केते है फार्मूला लगे दो जी 6 3 2 into 6 into 3 by yeah so 2 into 6 into 3 by 6 plus 3 18 9 2 and 4 km दीटा रे बहुत बढ़िया 2s1 s2 by s1 plus s2 तो बेस्ट अप्रोच फॉर द 2 जोटी दुईटा देथो तीनटा पे हमें एलसीएम लेवा देखो की ना उडे दीजिए मो ट्रेन गोज फ्रॉम एटा बेली गुंगे ना वाली गुंगे एटा वाली तापरे मतलब नहीं या गोला अलगो 20 स्पीड रे जाई जे फेरी आसी जी विथ ए सर्टेन स्पीड जानी नहीं से कहू जी बाकी एवरेज स्पीड मते भाई एबे 24 दे देई जे देन रिटर्न सेट केते कोई परिबा एबे हम यस सर सो केमती हम जानिबा एबे देखो सिंपल हम जो 2s1 s2 s1 plus s2 रे ओके भाई 2s1 s2 माने 2 into 20 into r स्पीड जानी नहीं x डिवाइडेड बाय 20 plus x इक्वल टू केते बताने 24 हे जाओ सो हिसाब एबे कर दियो 24 को हिसाब करे 5 चौ 6 चौ हे जेबो so this is 10x equal to 120 plus 6x so x will be equal to 30 एटा a bus cover 4 successive kilometer stretches at a speed of 10 km per hour 20 km per hour 30 km per hour and 60 देखो 4 successive kilometer stretches माने 1 किलोमीटर फास्ट 1 किलोमीटर 10 स्पीड है तापर 1 किलोमीटर 20 स्पीड है माने इनडायरेक्टली से कोन कहया को चाहू रे इक्वल डिस्टेंस ताले हमें ताले नहीं जीवा जे गोटेला 10 किलोमीटर पर आवर 20 30 and 60 take the LCM is the 60 so this is 6 hour this is 3 hour 6 3 9 2 11 12 हमें हिसाब को दे परिबा एवरेज स्पीड इक्वल टू 4 into 60 divided by 12 so this is 20 kilometer 20 बाहर कलो
40 kilometer. So 20. So 20. Hello. So 20. केदे 70. 20. 20. Okay. 20 राइट देखो मु फास्ट ट्रेडिशनली करी दउची तापर हमें जो एवरेज स्पीड पढिले ताको हमें केमि पुट करिया मु बतै देबी ट्रेडिशनली भी देखो एक्चुअली बेसी लंबा हेबोनी जस्ट इट्स ए मैटर ऑफ इक्वेशन देखो a man travels a certain distance by train at 25 किलोमीटर पर आवर जने गोटे पर्टिकुलर जगह को गला को तामने 25 स्पीड रे जाई छी एंड आसिला को केते रे आसी क्वेश्चन कहै छी 4 किलोमीटर पर आवर if the whole journey took 5 hours and 48 minutes माने जीवा आसीबा दीटा को टाइम let the distance be d d डिस्टेंस को 25 स्पीड रे गला ताले गला को एतकी टाइम लागिवो प्लस d डिस्टेंस को 4 स्पीड रे फेरिला एतकी टाइम लागिवो ए जो टोटल टाइम डाला 5 घंटा 39 मिनट 5 hour 48 by 60 this is nothing but 4 by 5 we can say now 29d divided by 100 equal to 29 by 5 29 cancel d equal to 40 kilometer this is the simple what equation हमर इजिली आंसर इजिली बाहरी गला but जदि के चाहू जो मुडा भरवाली भी करिवि then you can do because a into b by a plus b is not a matter of the calculation जेते बड़ जगह होना काहे कि हमें वैकेंट टाइम रे अभ्यस्त है कि अच्छे a into b by a plus b हम पाई कि मैटर एक्चुअली नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें जानी जे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम गोटे सिंपल जिंस देखो मो एवरेज स्पीड टिके आगरु जस्ट मु बतेला रु कहउतिले तमे गोटे जगह को गलो आ पडो रिटर्न आसिला टोटल टाइम तुमको मन कर 6 घंटा लागि जे एवरेज स्पीड तमरो 30 किलोमीटर पर आवर ताले जीवा आसीबा ताले केते डिस्टेंस कवर कर दियो 180 किलोमीटर 180 सो जीवा आसीबा दैट इज द मैटर जीवा आसीबा डिस्टेंस एग्जैक्ट मु एठी से ही पके परिबी जने भाई गोटे डिस्टेंस टे गलाल को कवर करूची वी आर डूइंग द गला बेल को जने डिस्टेंस टे कवर करूची s1 स्पीड रे आसिला को कवर करूची s2 स्पीड रे डिस्टेंस इज d but total time is t hour so तुमको जदि मु पचारिबी ताले जीवा आसीबा डिस्टेंस ताले केते कवर करिवो यू कैन से जीवा आसीबा डिस्टेंस 2d 2d equal to कौन हो एवरेज स्पीड इनटू टाइम एवरेज स्पीड 2s1 s2 by s1 plus s2 into time t तो बहुत सिंपल देखो गोटे दुईटे जदि हमें कैंसिल कर दोजे so I am getting d equal to s1 s2 by s1 plus s2 into t and सब जाक मेथड मु देखि साला परे को दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर दिस क्वेश्चन and we'll work on that in the boat and stream also boat and stream रे भी हमें ये क्वेश्चन पाइबा and एई क्वेश्चन हला पर्टिकुलर क्वेश्चन जोटा कि पिला एक्चुअली छाडी देंती otherwise they will go for the traditional approach at that time it becomes a difficult for traditional approach because at that time we will come across downstream and the upstream speed
So S1 S2 by S1 plus S2 into D, you can do it verbally. 25 into 4 by 25 plus 4. So that is 25 by 19 into, will just multiply that time. So देखो एबे हमें एली करि परिबा किछि भी नहीं एतरे सेते 2s1 s2 लागुतला एटिले s1 s2 टाइम डाली एक्स्ट्रा हिला आसी जेबो. So you can say that 25 into 4 by 25 plus 4 into 5 full 4 by 5 bode. Yeah. So this is 25 into 4 by 29 into 29 by 5. Just cancel out 5 1, you will get either 20 either. देखो एक क्वेश्चन रे जानी पारियो म्यूट कर दियो. A boy goes to his school from his house at a speed of 3 km per hour and return at 2 km per hour. Total time 5 घंटा. Very simple. 3 into 2 by 3 plus 2 into 5. 6 by 5 into 5. Answer will be 6. Most we can do that one. So forget the equation. Just you know, जानी था actually in case यदि format बारे को question आसे that is something different. But what I think actually time speed distance maximum is formatted question. So the distance here will be just 3 into 2 by 3 plus 2 into 5. Work is over. This is 6 kilometer. बुझिएला? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. केते वो को फटाफट नालाटी अलगा अछि. देखो कि कोई करि परिबो केमदि हम मु बते दछि रो. Not waste the time. देखो जे शॉर्टकट हम एक्चुअली भाबीबा फास्ट हमें ट्रेडिशनली मु बतो जे इक्वेशन सॉल्व करी. A farmer travel a distance of 61 km in 9 hours. He travel partly on foot at the rate of 4 km per hour, partly on bicycle at 9 km per hour. देखो total distance है 61 km. The distance travel on foot is केते? Foot रे आउ किछि एक्चुअली आउरे कोथरे कहियो bicycle रे bicycle. एबे देखो फुट रे मने करा जो से d डिस्टेंस कवर करी. दिस इज डिस्टेंस. बाइसाइकिल ताले केते कवर करिवो 61 माइनस d किलोमीटर. टोटल टाइम से केते नै जी? टोटल टाइम फर्स्ट आवर रहले फर्स्ट रे लिखा जी 9 घंटा. ओके आमे बे कोन करिवा देखो. ओके ओके दैट्स गुड एक्चुअली. आमे बे कोन करिवा देखो. फुट रो स्पीड हला 4 किलोमीटर पर आवर. जदी मो स्पीड जदी नेबी ये हला 4 किलोमीटर पर आवर. And partly on bicycle that is 9 km per hour. मुझे कहि पारिबी कि नै d डिस्टेंस को 4 स्पीड रे जीवो जति की टाइम लागिवो प्लस 61 माइनस d को 9 स्पीड रे जो एते टाइम लागिवो टोटल 9 घंटा. Yes कार sir. बुझियो नि इक्वेशन देन फ्री टू आस्क. d डिस्टेंस 4 स्पीड रे गला बाकी 61 माइनस d किलोमीटर 9 स्पीड रे गला. देन टोटल टाइम इज 9 आवर. So now we can solve the question actually. Let's solve this one. Option भी बेले लेली पिला पुट कर दियंती 9 रो मल्टीपल 61 पाखरे खोजंती एपटे d टा हो 4 रो मल्टीपल. So sometime that also work actually very effectively. So let's solve that one. एबे मल्टीप्लाई करिया पे जाउची देखो इक्वेशन बनेबा 9d plus 244 minus 4d equal to 36 into 270 and 54. This is 324. Solve कराबे 5d equal to 244 minus एली पळे जबा बडे 56 and 4 60 गुडे 80. So d equal to 16 kilometer. Okay. 180 ना खाली 80 मो खाली 80 हो 200 खाली 80 एक्चुअली हे जो देखो एबे एटा मते मागी देला व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय फुट दैट इज द 16 किलोमीटर. एटा गुटे टाइप रो पळेला आउ गुटे टाइप रो देखो जे हम सॉल्व करू विल क्लियर द कांसेप्ट हियर. एता राखु बराइले एन्जॉय खाली अछि देखो चैप्टर बहुत बढ़िया. फोबिया जार अछि एक्चुअली आगरु जे पढि जबी किछि भी सेमति नाही एथरे भी देखो हमें गुटे मेथड एठी लगै पारिया का माइंड आसु जे देखिला
61 किलोमीटर को 9 आवर्स रे कवर करूची किछि डिस्टेंस 4 किछि डिस्टेंस 9 एलिगेशन यस एलिगेशन पड़ियो सर एलिगेशन हमें लगे पारे वर्तमान गोटे इंसा कथा को एलिगेशन रे जदी मु स्पीड जदी पुट करे ताले रेशियो कहार बाहरिबो सो ये डिस्टेंस वाला टाइम रे डिस्टेंस रो काई बाहरिबो स्पीड रो बेस रे की अछि रे टाइम अछि डिस्टेंस बाय टाइम बा टाइम okay so we'll get the ratio of the time पिला सेटा डेली भूल करंदी तो एबे हमें लेखि एक्चुअली परिबा जे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाइसाइकिल हमें बे स्पीड पकेबा भाई फुट रो स्पीड दे जी 4 बाइसाइकिल स्पीड दे जी 9 टोटल एवरेज स्पीड हम जानि नो बट एति की जानि छु 61 किलोमीटर को 9 घंटा लागी नाउ यू पुट फुट जगह रे 4 बाइसाइकिल 9 it is 61 by 9 what you will do multiply 9 9 मल्टीपल just multiply कर दियो 9 कॉले 36 पाई जीवो ये 81 ये 61 you will get this as 20 and this is 36 5 25 so this is equal to 4 कहारो रेशियो कहारो रेशियो टाइम या पिलाटा डिस्टेंस li भाबंदी बहुत पिला li भाबंदी 9 को 61 कला को छिंडू नथबो so this is the 9 hour so this is the 4 hour and this is 5 hour माने से फुट रे ता माने 4 घंटा ट्रैवल करी छी एंड बाइसाइकिल रे ता माने 5 घंटा so distance cover by foot that's just so yeah and that's good 4 स्पीड रे 4 घंटा so this is equal to केते होताले 16 किलो बुझियला आगे सर यस सर okay the miracle is here देखो एबे हमें सॉल्व करिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरा भरवाली कर देबो जोने 61 किलोमीटर को 9 घंटा जे हमें सेटा भूली जाऊ फास्ट हमें खाली 9 घंटा टाइप खाली मने रखो अच्छा से फुट रे जाई 4 किलोमीटर पर आवर बाइसाइकिल ता माने 9 किलोमीटर पर आवर दैट मींस बाइसाइकिल रे ता माने प्रति घंटा रे 5-5 किलोमीटर अधिक जाई मु एटी अप्लाई करिया को जाउची हमें जेमति क्वेश्चन जो करथिले जो शेप एंड द गोट वाला क्वेश्चन लाइक पिकअप हेड टेल वाला जो टू व्हीलर फोर व्हीलर हमें जो कांसेप्ट सिखिथिले जोटा एलिगेशन रे हमें सेटा लेवे पकेया पे जाउची टोटल टा जदी हेजो यस जदी टोटल डिस्टेंस सरबाउ टिके जो जदी टोटल डिस्टेंस जदी से साइकिल रे जदी कवर करी थांदा किमा टोटल जदी फुट रे तमे जोटा हो डेजलो एज्यूम कर दियो टोटल जदी से फुट रे जदी कवर करी थांदा सॉरी टोटल फुट कहूजी टोटल टाइम जदी से फुट रे ट्रैवल करी थांदा ताले केते डिस्टेंस कवर करी थांदा मात्र 36 किलोमीटर 4 केते जीव रे ताले 36 किलोमीटर जीव ताले तमे बाकी से केते जाई जी देखो बाकी से एक्चुअली 61 किलोमीटर जाई जी माने आउरी 25 ताले कोठी ताले अधिक होला जो बाइसाइकिल या 5 ताने बाइसाइकिल अधिक सो हमें देखो बहुत सिंपल एक्चुअली एला हमें बाइसाइकिल नेबा एथरे 4 होजी एथरे 9 को मु एथरे 5 टेले बाहर कर दोजी बिकॉज़ मु टोटल स्पीड केते जूम कर देली 4 तामने जूम कर देली ताले 4 जदी हमें नेबा 4 न तो सेई भाई 36 किलोमीटर कवर करूजी बट एक्चुअल डिस्टेंस सेई 61 कवर करूजी तो ए जो 25 किलोमीटर ताले से एक्स्ट्रा पळेई जी सेरा को आडू ताले बाइसाइकिल ले ताले से 5 सो बाइसाइकिल 5 केते ना ताले 5 घंटा एबे काम होबे एक्चुअली खत्म ताले बाइसाइकिल यदि से 5 घंटा जाई छै माने 45 किलोमीटर जाईथबो बाकी 16 ताले फुट रे नले तुम जो 4 न जो 36 जो हिसाब कर जो दुई तरह भाई 18 18 कर दियो 18 और एटा 25 हे जबो नहीं सॉरी हां 9 * 5 करिया पड़ियो 45 हेबो से त हमें हिसाब कर दे परिबा सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बाइसाइकिल साइकिल लिखि दोजी ताले फुट रे केते बतानेली 16 ओल्टेक भी तमे करि परिबो
टोटल मन कर से 9 स्पीड रे जाई थांदा टोटल 9 स्पीड रे जदी से जीव ताले 81 कवर करया के आउरी 20 तामने कमी गला कोन पे आउरी 20 कमी गला ना फुट रे से 9 न जाई कि 4 रे जाई छी माने 5 ताले आउरी कमी जाई छी 5 कमी जी 20 कमी जी माने से 4 घंटा तामने कमे कि तामने जाई छी 4 घंटा फुट रे जाई छी तामने 16 किलोमीटर जो रैबिट और पिजन वाला या एग्जैक्ट पूरा सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट रैपिड पिजन जो कॉइन वाला से उड़ा सब पूरा हमें बहुत कर दिले से क्वेश्चन वाला एरर सब तो से गोटे exactly same type of question a man travels a distance of 80 kilometer in 7 hours partly on foot at the rate of 8 kilometer per hour 8 kilometer per hour partly on bicycle at 16 kilometer per hour the distance travel on the foot is kete मोटी bicycle को देखो नउजी टोटल जदी से 16 स्पीड जदी जाई थांदा एडी दाला आउरी 8 तामने कमी जीवो 16 स्पीड जदी 7 घंटा जीवो ताले 112 कवर करिया कथा 80 कवर करि जे केते डिस्टेंस ताले आउरी तामने कमी जाउ जे 32 किलोमीटर ताले 8 प्रति घंटा रे कमी कि तामने 32 ये तो भाई ठीक जाई ताले कमी जे कोआडू तामने एफर्ट आमे सबु तामने 16 हिसाब कर देले देखिला लोग हमर 32 किलोमीटर डिस्टेंस आउरी कम ट्रैवलिंग होई सेति में रेस्पोंसिबल किए तामने फुट रे जो ट्रैवल करि जा ताले फुट रे जो 8 जो 32 कवर ना तामने थिले 4 घंटा पुनी सो डिस्टेंस कवर बाय फुट सॉरी या सो डिस्टेंस बुझेला जाओ आउ थरे वीडियो देखो काली हम बहुत बढ़िया एक्चुअली नया कांसेप्ट पढेबा द फार्मूला एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड हम एथरे गोटे मने रखिया को पड़ियो धीरे धीरे सीखी जवाइले किछि भी ओरिड हवा नहीं किछि भी एक्चुअली माने बडो निमदी भावनी दिस इज आल्सो एज सिंपल एज यू थिंक जते सिंपल तुम भाबी पारा हम सेते सिंपल एटा को बनेबा एंड किछि भी एक्चुअली डिफरेंट वंस तुम रेशियो क्लियर हेला ना पिलांकर बेसी प्रॉब्लम एक्चुअली रेशियो एली या मिक्सचर एक्चुअली थाए तो जो पिला मिक्सचर आउ रेशियो एक्चुअली क्लियर हेला आकु ताले किछि भी प्रॉब्लम नहीं ओके काली मु देखुजिली सकाळू क्लास जदी हेबो हेबो नले कंप्लीट हमु सी परे बोले पडियो फास्ट भी क्लास हे पानी ना माने बहुत प्रॉब्लम अदरवाइज पुनी से 10:30 नले यदि 10:30 को भी आसुनी म ठीकटा 10:40 10:45 को भी आसु माने गोटे सब आश्चर्य लागु जे एटा एमती गोटे नेटवर्क भी टाइम देखि आसबाटे गोटे मुश्किल माने याद आसीवनी नले तो ठीक से नले आसीबो देखो सेम प्लेस रे